Assalamu alaikum students. I welcome you all here in the first lecture of Discourse Studies. We are going to start with the introduction of discourse. What is discourse? And if you remember, I have also told you something in about discourse in outlines. Okay, what is discourse? This is a question. And the answer is yes. Discourse in simple terms is, as you can see in this picture, first of all, and these two persons, they are speaking, right? So it is a language. So discourse is actually a language, a unit of language longer than a single sentence is called discourse. Longer than a single sentence means कि it doesn't only include a single sentence, क्योंकि इसमें discourse है, इसमें discussion है, इसमें लैंग्वेज यूज हो रही है, तो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होगा, बट इट इज मोर देन अ सिंगल सेंटेंस. सो अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस इज कॉल्ड डिस्कोर्स. इन सिंपल टर्म्स लिंग्विस्टिक्स में डिस्कोर्स किसे कहते हैं? इट इज एक्चुअली अ लैंग्वेज, a speech or any written as well. चाहे वो लैंग्वेज स्पोकन में हो या वो रिटन में हो, उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्कोर्स, राइट? ओके, इट इज अ continuous stretch of language, either written or spoken. This is what I have told you before. मैंने आपको पहले भी कहा है. A continuous stretch of language. Continuous stretch of language means, for example, a person is speaking something. अब वो continuously बोलता जा रहा है, और he is writing something. Continuous stretch है, लिखता जा रहा है या लिखा हुआ एक text है. It's more than a single sentence. सिर्फ single sentence की बात नहीं हो रही. It's more than a single sentence, either in spoken form or in written form. That is actually called as discourse. जब भी discourse का आइडिया अपने माइंड में लाना चाहें इन सिंपल टर्म्स, तो ये पिक्चर जरूर आप याद कर लें. They both are speaking, right? So they both are using language. So language, linguistics में a unit of language longer than a single sentence. जो भी आपकी language है, either spoken or written, जो एक sentence से ज़्यादा है, that is actually called as discourse, right? Okay. According to Cook, novels as well as short conversation or might be equally rightfully named डिस्कोर्स. आपके नॉवेल्स और शॉर्ट कन्वर्सेशन, उनको आप डिस्कोर्स कह सकते हैं. उनको आप क्यों डिस्कोर्स कह सकते हैं? क्योंकि उसमें भी लैंग्वेज यूज हो रही है. लैंग्वेज वहाँ पे यूज किस उसमें हुई हुई है? मोर देन अ सिंगल सेंटेंस. ये चीज़ आपने याद रखनी है. सिंगल सेंटेंस से ज़्यादा जो है, जितनी भी लैंग्वेज यूज होती है, आइदर इन स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म, लाइक फॉर एग्जांपल्स नॉवेल्स, या जितनी भी कन्वर्सेशन है, शॉर्ट कन्वर्सेशन है, either in novels in written form and conversation in spoken form, they actually called as discourse, right? So we just want to know something about the background of this discourse, कि ये word discourse कहाँ से आया है, right? Originally the word discourse comes from Latin discursus, which denotes, yes, ये Latin का word यहाँ से लिया गया है, discursus, and which denotes, which means, which shows conversation or speech, right? In simple word term, you may say that discourse is what it is, either a conversation or speech. Conversation or speech का दूसरा नाम क्या है? It is actually called as discourse, which is taken from, which has come from a Latin discursus, right? So it shows and it denotes, this Latin word shows what? Conversation or speech. So in simple terms, what is actually discourse? If somebody asks you either in objective or in subjective, and if he asks you to define discourse, तो आपने simple उसको define करना है, that it is either a conversation or speech, right? Okay, coming to the next one. Yes, when we say discourse, you look at these two persons, इनके mouth की तरफ जो है वो
इशारा हुआ हुआ है and they are actually showing their conversation or speech, and that conversation or speech is actually called as discourse. So there are certain characteristics of discourse, or certain elements of discourse with the help of which discourse can be understood. इसको और बेहतर तरीके से understood किया जा सकता है. Discourse is actually archaic, the capacity of orderly thought or procedure, rationality. Discourse में हमेशा rationality वाला aspect में ज़रूर मौजूद होगा. What is actually called as rationality? Rationality means कि उसमें order ज़रूर होगा. यानी आप ऑर्डर के थ्रू ही किसी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इफ इट इज ऑर्डरलेस, उसमें ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, तो वो कभी भी माइंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड समथिंग. आप हमेशा डिस्कोर्स को, कन्वर्सेशन को, स्पीच को, टेक्स्ट को तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब तक उसमें ऑर्डर होगा, रैशनैलिटी होगी, यानी आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा विद इट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. उसमें एक ऑर्गेनाइज, एक प्रॉपर प्रोसीजर. व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीजर? प्रोसीजर आप किसे कहते हैं? which has a certain process. उसका एक proper process हो. It starts from beginning, it has a mid and then it has an ending. इसी तरह discourse में भी क्या होता है, आपका proper beginning है, mid है, ending है. As you can see the example of novels. ठीक है. So it's always archaic और it's always have a rational aspect. उसमें ज़रूर rationality होती है. It has an order, it has a proper procedure, right? Then it has verbal interchange of ideas, especially conversation. Yes, you know very well conversation में क्या होता है. It is always an interchange of ideas. यानी आप oral, either oral or written, आप उसमें कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज. सो व्हाट हैपेंस इन डिस्कोर्स? आइडियाज आर एक्चुअली शेयर्ड, आइडियाज आर एक्चुअली एक्सचेंज्ड विद इन अ discourse, right? So formal and ordinary and usually sorry, again it's, yes, extended expression of thought on a subject. Yes, it always have an order, it's always have a formal extended expression of thought on a subject. कि हमेशा इसमें किसी भी subject पे, किसी भी topic पे एक extended expression होगा, एक lengthy expression होगा of ideas, of different thoughts which are expressed in order form in discourse, right? So connected speech or writing, yes, whenever you read any text, whenever you speak something, you always make a connections in it. There is always a connection among all the ideas which are present in any kind of conversation or speech or in writing. हमेशा जितने भी आपके डिस्कोर्सेज होंगे या डिस्कोर्स आप जब भी पढ़ते हैं, आइदर इन स्पोकन फॉर्म और इन रिटन फॉर्म, उसमें हमेशा आइडियाज में कनेक्शन इज डेवलप. चाहे वो आउटर वर्ल्ड का हो, इनर वर्ल्ड का हो, या जो चीज़ शो हो रही है या उसका बैकग्राउंड. सो देर इज थिंग्स आर ऑलवेज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मेकिंग कनेक्शंस एंड लिंक्स, राइट? So linguistic units such as conversation or story larger than, I guess this is what I have told you, कि ये वो conversation है जो कि larger than a sentence है, right? So another characteristic of discourse is that it is obsolete. Obsolete means that it is always have a social familiarity. Social familiarity का क्या मतलब है? If you remember, मैंने आपको बताया था outlines में कि discourse या conversation या written text या spoken हमेशा किस चीज़ को represent कर रहे होते हैं, किसी social background को, राइट? तो डिस्कोर्सेस में सोशल फेमिलियरिटी ज़रूर होगी, यानी सोशल उसके शेड सोसाइटी के ज़रूर होंगे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, पावर से रिलेटेड हो, उसके उस चीज़ के सोसाइटी के शेड्स जो हैं वो उस टेक्स्ट पे ज़रूर होंगे, राइट? सो सोशल फेमिलियरिटी आपको मिलती है, सोशल सोसाइटी के आइडियाज़ आपको मिलते हैं इन योर discourses. So a mode of organizing knowledge, ideas or experience that is rooted in language. Language कभी भी language is never
अंडरस्टूड अलोन। लैंग्वेज को कभी भी अकेले रख के नहीं समझा जाता। लैंग्वेज इज ऑलवेज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करते हैं, आप अपने आइडियाज को पढ़ते हैं और उसको अपनी रियल लाइफ से एसोसिएट करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। और वो जो लैंग्वेज के अंदर रूटेड इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर जो मौजूद होते हैं, आइदर इन हिडन फॉर्म, जिसको आप फिर एक्सप्लोर करते हैं, लैंग्वेज को आप एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स स्टडीज में आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लैंग्वेज, यू आर गोइंग टू सी द बैकग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज, व्हाई दिस लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड, राइट? सो इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ योर आइडियाज और एक्सपीरियंसेस, राइट? So what is discourse? Discourse can be defined in three ways. This is the summary of whatever I have told you before. Language beyond the level of a sentence. Language behaviors linked to social practices. Language हमेशा आपकी linked होती है, associated होती है किसके साथ? आपके social practices के साथ, आपके social society के जितने भी different practices हो रही हैं, society में जो चीज़ चल रही है उसके साथ linked होते हैं। सो लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ थॉट, हमेशा लैंग्वेज एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ थॉट एंड आइडियाज, हमेशा लिंक्ड होगी, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी। डिस्कोर्स एनालिसिस इज यूजुअली डिफाइंड एज एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस, राइट? एंड द एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स इज टिपिकली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन टेक्स्ट एंड कन्वर्सेशन। आपने डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या चीज़ एनालाइज करना है? लैंग्वेज को एनालाइज करना है जो कि टेक्स्ट और कन्वर्सेशन में यूज हुई है, राइट? आपको मेन चीज पता होना चाहिए कि डिस्कोर्स एनालिसिस में आपने क्या करना है। यू आर गोइंग टू एनालाइज लैंग्वेज आइदर इन टेक्स्ट फॉर्म और कन्वर्सेशन फॉर्म। हमने लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना है, लैंग्वेज के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करना है, व्हाई दिस लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड, दिस विल बी स्टडीड इन डिस्कोर्स, राइट? सो दिस इज जस्ट a kind of table which I want to show you here. ये भी उसी चीज़ों का क्रक्स है जो कि मैंने, या निचोड़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। आपने डिस्कोर्स, एक डिस्कोर्स एनालिस्ट क्या करेगा, यानी एक डिस्कोर्स को पढ़ने वाला, टेक्स्ट को पढ़ने वाला या कन्वर्सेशन को एनालाइज करने वाला क्या क्या चीज़ें देखेगा? पार्टिसिपेंट्स, हु आर द पार्टिसिपेंट्स, what is the relationship between them, what are the differences in power and knowledge, you are going to see in all these things about the participants of the discourse. in discourse में अगर लिखा हुआ टेक्स्ट है तो उसमें फॉर एग्जांपल नॉवेल्स के कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस, पावर और नॉलेज किस तरह उसमें यूज हुआ है। और टेक्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे, टेक्स्ट का क्या मतलब है, व्हाट डू वी इंटरप्रेट मीन, उस टेक्स्ट का मीनिंग क्या, हमने अंदाजा लगाना है विद द हेल्प ऑफ डिस्कोर्स स्टडीज। एक नाउ डिस्कोर्स एनालिसिस, जो एनालिसिस करेगा वो क्या होगा, एनालिस्ट होगा, राइट? अब वो क्या है, एनालिस्ट क्या एनालाइज करेगा, टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और पार्टिसिपेंट्स को एनालाइज करेगा, यानी जो करेक्टर्स उसमें यूज हुए हैं, जो स्पीकर्स हैं, राइट? किस कॉन्टेक्स्ट में वो टेक्स्ट यूज हुआ है, उस टेक्स्ट को किस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ व्हाट डिस्कोर्स स्टडीज। सो डिस्कोर्स हैज ऑक्युपाइड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। मैंने आपको पहले बताया है कि डिस्कोर्स का एवरीडे लाइफ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ इट्स बैकग्राउंड। लर्निंग हाउ टू एंगेज इन डिस्कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। आपने ये चीज़ लर्न करनी है इस सब्जेक्ट से, डिस्कोर्स से आपने ये चीज़ लर्न करनी है कि आप उस कन्वर्सेशन को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? लैंग्वेज स्टूडेंट्स और टीचर्स नीड टू पे अटेंशन डिफरेंट पैटर्न्स इन डिस्कोर्स, किस तरह, हाउ डिफरेंट पैटर्न्स हैव बीन यूज्ड इन डिस्कोर्स, वो कौन से पैटर्न्स हैं, कौन से डिफरेंट पाथ्स हैं
which are used in discourse, जिनकी मदद से आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड टू फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज, उसमें कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज हुई हुई हैं उसका डिस्कोर्स में, या वो किस कॉन्टेक्स्ट से बात की गई है. यू हैव टू फोकस इन ऑल दीज. Discourse and analysis involves real text, not invented, constructed, and artificial text. Real text and discourse and works with utterances, not independent sentences. ये जो real text है और utterances है, ये real text written से related है, और ये utter का मतलब है अल्फाज की अदायगी. तो ये जो है this is actually with spoken. ठीक है. आप डिस्कोर्स एनालिसिस में आपने इसमें रिटन में क्या करना है, जो चीज नहीं बताई गई वो आपने एक्सप्लोर करना. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, क्योंकि डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोवाइड यू टूल्स. फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ नॉवल. ठीक है, वो मेरा रियल टेक्स्ट है. उस रियल टेक्स्ट, सॉरी, मैंने एक नॉवल पढ़ना है, उस नॉवल को मैंने पढ़ा है, मैंने उसमें से वो चीज निकालनी है जो कि सामने नहीं है, उसको मैंने डेप्थ में जाके देखना है विद द हेल्प ऑफ ऑल द टूल्स विच आर प्रोवाइडेड विद डिस्कोर्स एनालिसिस. मुझे डिस्कोर्स एनालिसिस करने के लिए जितने भी मेथड्स बताए जाएंगे, मैं किस पे अप्लाई करूंगी, आई विल अप्लाई ऑन द टेक्स्ट, और मैं वो चीज उसमें से अंडरस्टैंड करूंगी जो कि हिडन है. राइट. इसी तरह विद द अटरेंस, और अगर स्पोकन की बात हो तो स्पोकन में भी सिर्फ मैंने वो सेंटेंसेस नहीं अंडरस्टैंड करने जो मेरे सामने हैं, बल्कि उन सेंटेंसेस के बैक पे क्या है, दिस इज व्हाट विल बी अंडरस्टूड बाय मी. सो I think it's enough for this first topic. I want you to understand it after reading 1 to 2 times. Focus on these slides, and then do ask me any question with respect to any idea which you haven't understood. Inshallah, I will come again with a new topic. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.